All right, some breaking news coming in at this moment. The Congress party has finally announced its candidate from Varanasi. Ajay Rai will in fact be the candidate for the Congress party from Varanasi. Remember, this person, Ajay Rai, has in fact contested in 2009 also against Murli Manohar Joshi of the BJP. He lost that election, but this time around the Congress has in fact asked him to contest again. Shiv Arur joins us from Central Delhi. Now, Shiv, after much speculation whether it is going to be Digvijaya Singh or someone else, finally it seems the Congress decided that it is going to be the local candidate. They've decided on the local candidate. It had been expected for a while now, Sanket and Maruk, that Ajay Rai, the sitting MLA from Banaras, would actually be chosen. A variety of permutations and combinations had been worked out very publicly by the Congress, including, as you rightly mentioned, people like Rashid Alvi, people like Digvijaya Singh, actually throwing their lot in offering to actually stand against Narendra Modi. This has taken a great deal of work by the leadership of the Congress to decide finally on not parachuting in a high-profile leader, but leaving it to the local strength, which is the sitting MLA, and who could be better than someone who's proven at the local level. Ajay Rai, known to be a politician with a great degree of pull in that particular area, which is why this very high-profile fight, certainly the most high-profile fight of the 2014 election, has been left to the local leader. Right, I want to bring in Arthur at this point. Arthur, it is known that Ajay Rai, being a local leader, also holds sway over a considerable Bhumiyar Brahman voter constituency in Varanasi. Do you see the BJP leaders, or particularly Narendra Modi, having any worry lines over Ajay Rai's candidature? Well, Baru, we'll go to Arthur in just a bit, but Shiv, you were telling us how finally the Congress having chosen a local leader, perhaps after all that we heard from right down from Digvijaya Singh to the other leaders of the Congress party, suggesting that perhaps a heavyweight would be required to fight Narendra Modi. That's right. Remember, for at least the last month and a half, about 45 days, Maruk, there's been a to and fro between Banaras and New Delhi. There have been reservations that have been very publicly expressed at the local unit level by the Congress in Varanasi about the decisions being made, even before the decisions were actually final. So you had people like Digvijaya Singh, Rashid Alvi, and to our understanding, certain others as well, who had actually offered to step up and sort of fight this battle on behalf of the Congress, but there was a great deal of resistance, also very public, from the local unit level, in Banaras about why decisions would be taken like this. It needed to be more tactical. It needed to take into account sway and persuasions over the caste equations in Banaras. And I think at the end of the day, the local unit has been able to prevail upon the leadership to choose tactically and not look at it in terms of a sort of public relations decision. And at the end of the day, I think that's the decision they've made. So it's Ajay Rai versus Arvind Kejriwal versus Narendra Modi in Banaras. Adil Khan is back with us. Adil, you were talking about whether this should give any concerns to the BJP and Narendra Modi. well, that doesn't seem to be the case, Maruk, because Narendra Modi, we know, has the full backing of the UP state BJP, and not just the UP state, the entire country's force will be there to mobilize the voters. We know that they believe that he's one force who cuts across all castes and any other equation. So therefore there's no reason for the BJP to worry from that seat. They're quite confident, and they know that there is a strong wave. He has been campaigning all over the country. He has the backing of people, and there's nobody is going to stop him. All right, Atir Khan, do stay on with us. We'll try going across to Ashar Khan, our correspondent, in just a short moment. He in fact got us this news that the Congress has decided to field Ajay Rai, a local candidate from Varanasi. Remember, this comes after much speculation, Maruk, whether Rashid Alvi is going to contest or not. He was the one who actually even wrote a letter to Sonia Gandhi that he should be fielded against Narendra Modi. Then we had the rumor, the speculation, whether someone like Digvijaya Singh will actually be fielded. Mr. Pratap Singh is joining us from the Congress party on the phone line. Mr. Singh, clearly as far as the Congress party is concerned, after the tall claims being made by Digvijaya Singh and the others of wanting to fight from Varanasi, clearly you have chosen a local leader. Does he even have a chance against Narendra Modi? देखिए, जो हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं अजय राय जी, वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं बनारस में। वो लोकल एमएलए हैं, स्थानीय हैं, और वो
जमीन पे मोदी को सिर्फ वही फाइट देंगे। बाकी जो लोग आउटसाइडर पहुंच रहे हैं वो मीडिया में भले बने रहे हैं और ये देखिए नेक टू नेक फाइट होगी वहां पे। अखिलेश जी, मैं संकेत उपाध्याय बोल रहा हूं। मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा इतना है, 2009 में अजय राय मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हार गए थे, तो अब 2014 में आपको क्यों लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी पे हरा पाएंगे क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और वहां पे अजय राय सिटिंग एमएलए हैं, सबसे स्ट्रांग हैं, पब्लिक उनके साथ है, जितने भी पोजीशंस हैं वो उनके फेवरेबल हैं। तो हम नरेंद्र मोदी जी को एक स्थानीय कार्यकर्ता के द्वारा हरवाएंगे वहाँ पे। अखिलेश जी, ये बताइए कि इतनी देर क्यों लगी कांग्रेस पार्टी को ये कैंडिडेट चूज करने में? ये भी कहा जा रहा था कि सेक्युलर पार्टीज एक कैंडिडेट खड़ा करेंगी एक साथ, शायद वो प्लान आपका कामयाब नहीं हुआ। नहीं, ये आप लोगों की अपने मन की बात थी। सेक्युलर पार्टी जो अपना एक यूनानिमस कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ऐसी कोई मूव या ऐसी कोई बात ना कांग्रेस ने शुरू की थी ना कांग्रेस से किसी ने कही थी। ये मीडिया के अपने स्पेकुलेशंस थे, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारा जो प्रत्याशी है वही बेस्ट कैंडिडेट वहाँ पे है। और आपने देखिए पिछले 2-3 सालों में बनारस में जितने भी मुद्दे हुए इसी व्यक्ति ने वहाँ लड़ाई लड़ी है। कई बार आप लोगों ने कवर भी किया है। मैक्सिमम टाइम जनता के साथ बनारस के मुद्दों की लड़ाई इस व्यक्ति ने लड़ी। सांसद भले जोशी जी थे पिछले 5 वर्षों में, लेकिन क्या किया? सड़क पे कभी नहीं है कोई लोकल लीडर या कोई बाहर नहीं। मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह, द क्वेश्चन हियर दैट वुड बी आस्क्ड टू द कांग्रेस पार्टी इज व्हाई दिस लॉन्ग डिले? इतना समय क्यों लग गया, इतना विलंब? नहीं, विलंब लगने की कोई कारण तो होते नहीं है। पार्टी संगठन कब किस चीज का निर्णय लेता है, क्योंकि ये भी बीजेपी में भी तमाम उठापोह चल रही थी कि मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बाद में डिसाइड हुआ कि हाँ मोदी अब वहीं रहेंगे जोशी जी को लेकर के। तो उसके बाद तो मुश्किल से 20 दिन हुए होंगे, 15 दिन हुए होंगे, 20 दिन हुए होंगे मैक्सिमम मोदी जी का जब कैंडिडेट डिसाइड हुआ उसके बाद। तो हम लोग तो वेट कर रहे थे कि क्या किसको वहाँ पे लड़ाते हैं। अखिलेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि अजय राय जो है पहले उन्हें बीजेपी से भी लड़ा है, समाजवादी पार्टी से भी लड़ा है, तो एक किस्म का कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आगे खड़ा कर दिया है। आपको ये लग रहा है कि नंबर 3 पे आने वाले हैं, जहां तक वाराणसी का ताल्लुक है, तो किसी ना किसी को लगा दें, तो लोकल लीडर को लगा देते हैं? नंबर 3 पे नहीं, नंबर 1 पे रहेगा हमारा कैंडिडेट। नंबर 3 पे कौन ला देगा? ये जो बाहर से जाकर के मीडिया में बने रहते हैं अजय केजरीवाल, वो ला देंगे या कौन ला देगा वहाँ पे? हम अभी आप देखते रहिए, बहुत चीजें अभी आपको थोड़े दिनों में दिखेंगी। हमारा कैंडिडेट वहाँ पे मोदी जी को फाइट देगा और मोदी जी वहाँ पे घिरेंगे और हम जीतेंगे वहाँ पे। क्योंकि देखिए ये लोग बाहर से आए हैं, ये चले जाएंगे। आप लोकल रिपोर्टर से या संकेत को पता यहाँ रहे हैं, बनारस में पिछले 5-7 वर्षों में किसने लड़ाई लड़ी बनारस की हर चीज के लिए? एक तरफ से आप वो कह रहे हैं, फिर इतना टाइम क्यों लगा? अगर आप इतना श्योर थे कि लोकल कैंडिडेट इनफ है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, तो इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी कांग्रेस पार्टी को? मैंने बताया आपको कि मोदी जी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ तो होने पे भी तो 15 दिन ही हुए भैया, 20 दिन हुए होंगे। उसके पहले तो 1 महीने से तो वो लोग चल रहा था कि मोदी लड़ेंगे, लेकिन उनमें और एक उनके वरिष्ठ नेता जिनको कानपुर शिफ्ट किया गया, डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मोदी जी लड़ेंगे कि जोशी जी लड़ेंगे। तो उनके डिसीजन होने के बाद हम लोगों ने जब पता लगा कि लड़ेंगे ये, तो उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाई और उसके बाद तो 15-20 दिन ही तो हुए होंगे मोदी जी के कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद। All right, Congress MLA from Uttar Pradesh, Akhilesh Pratap Singh, thank you very much for speaking to Headlines today. Time now for a short break, but our non-stop coverage for 3 hours is going to continue, Maruk. We have about 20 minutes remaining now for the campaigning, for the third phase to be over.